हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा तीसरा दिन सर्बिया में और अभी निकल पड़ा हूँ हॉस्टल से और अभी करूँगा सामने ब्रेकफास्ट और उसके बाद में इंशाल्लाह आज बेलग्रेड के बाहर जाने का प्लान है, स्पेशली नोविसाद जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैप वगैरह थोड़ा देख लिया है, बस लेनी है, उसके बाद में ट्रेन स्टेशन जाना है और उसके बाद में इंशाल्लाह टूर करना है खूबसूरत नोविसाद का और आपको बताना है कि क्या क्या होता है यहाँ पर और क्या आपको ज़रूरी है यहाँ पर आने के बाद में नोविसाद को विज़िट करना। सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी डिस्कस, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। शुरू करते हैं शुरुआत से। ये सिटी सेंटर के करीब में मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ से मिलेगी मुझे बस नंबर 41 जो ले जाएगी मुझे मेन सेंट्रल स्टेशन तक। ये स्टॉप है एक्चुअली KFC के सामने, बहुत ही फेमस स्टॉप है बस का। यहाँ से काफ़ी सारे बसेस और ट्रैम्स वगैरह भी जाती है, ट्रैम स्टेशन भी है इसके अपोजिट साइड में। तो आपको बस भी दिखा देते हैं। ये है बस यहाँ की जो ऑन टाइम आती है, आप ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हैं कि क्या टाइमिंग है। और अभी मैं ट्रैक करूँगा रास्ता रेलवे स्टेशन का क्योंकि वहाँ मुझे उतरना है। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. गाइस तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद में, मतलब 1 घंटे के ट्रेन के सफ़र के बाद में अभी हम पहुंचे हैं नोविसाद स्टेशन। 1 घंटा पता भी नहीं चलता है एंड टिकट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 500 यहाँ के दिनार। सो लेट्स एक्सप्लोर। I keep on thinking back on it when we escaped with our first real paycheck. Wasn't much but we needed less, yeah, than we do now. ट्रेन स्टेशन से अगर आपको सिटी सेंटर एरिया ऑफ नोविसाद तक जाना तो इट विल टेक यू अराउंड 2 किलोमीटर और 20 to 25 मिनट्स की जर्नी है। Okay, so I got some Dubai friend here, Sham and Umar, right? So who's the most shy person? Umar. So Umar is the most shy person. He doesn't want to say anything. But Sham, so can you say that how you liking Belgrade or Serbia? It's very much interesting and we should visit one time. Yeah, especially for Indian, it's very easy to visit. So what the most important thing or popular thing you like in Serbia till date? Till there, if I say, people are very friendly and helping, and I like the clock tower. It's clock tower. The clock tower in Belgrade. Yeah. Here also we have one clock tower back side. यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे बड़े कैथेड्रल होते हैं। मेरे अगर आपने दूसरे वीडियोस देखे होंगे बुदापेस्ट और वियना वगैरह के, तो वैसा ही कैथेड्रल है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है अंदर से। सो इट लुक्स अमेजिंग एंड वर्थ विजिटिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys. सिटी सेंटर से जस्ट 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये ब्यूटीफुल सा पार्क। आप देख सकते हैं पीछे छोटा सा पॉन्ड और एक अमेजिंग रिलैक्स चिलिंग वाली फीलिंग आती है, स्पेशली व्हेन यू आर विद द फैमिली। दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस आई कैन सजेस्ट। यू कैन जस्ट सिट अराउंड एंड चिल। ऑफ नोविसाद और पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डैन्यूब रिवर जिसको हम लोग क्रॉस करके वो साइड जा रहे हैं। बैक साइड में था और जो
10 मिनट चढ़ाई करने के बाद में पहुँचे हम लोग इधर ऊपर ऑफ फोर्ट्रेस के। यार डिफिकल्ट, बट एनीवेज इट्स रियली वर्थ टू कम हियर, क्योंकि यहाँ से जो ओवरऑल सिटी का व्यू है दैट इज़ लाइक किलर लुक। ज़बरदस्त। पीछे का जो सिटी व्यू है ये देख के मुझे आ गई है प्राग की याद, क्योंकि प्राग के भी अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो भी आप टॉप सिटी के एरिया पे जाओ जैसे कैथेड्रल वगैरह में, तो उनको जो पीछे जो कवली दिखाई देते हैं वो होते हैं यही गे हुए कलर के। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द कॉमन थिंग इन यूरोप विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ट्रैवल करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, बस का और ट्रेन का। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग ट्रेन का ऑप्शन लें, जो आपको मिलती है ट्रेन बेलग्रेड के सेंट्रल स्टेशन से। 1 आवर में यू आर इन नोविसाद एंड इट्स लाइक अ वेरी गुड जर्नी टू सी डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टेशंस। और यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी छोटी सिटी है। आप लोग 4 to 5 आवर्स में भी फिनिश कर सकते हैं, या अगर आपको रुकना है यहाँ पर तो होटल के भी ऑप्शन है, तो यू कैन स्टे हियर एंड टेक और स्पेंड योर मोर टाइम। द मोस्ट फेवरेट प्लेस इन सर्बिया आफ्टर Belgrade if you have time to visit, so please do consider. Personally I like it and I definitely recommend. See you in another video. Take care. Bye bye. This Novisad central station is much better than Belgrade central station, surprisingly. अभी वहाँ पर काम चल रहा है, बट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। टिकट काउंटर भी आप पीछे देख सकते हैं, देयर इज़ नो क्यू, टिकटिंग इज़ वेरी फास्ट। दे विल टेल यू कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है ट्रेन का। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था 450 to 500 dirham टिकट्स होती है। दैट डिपेंड्स ऑन जर्नी एंड द डे एंड द टाइम व्हेन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स the other station. Understand that we get one chance, you